Good afternoon to all. Welcome to class 12th economics. Unit is going on national income and related aggregates. And today we have to start a new method. The third method of calculating the national income and the other aggregates. That is product method, or which we call value added method. Asha, we have already covered the income method and the expenditure method. Income method, I told you, is based on the incomes generated in the economy, where we are adding all the incomes together, clubbing all the incomes and getting the national income or the aggregate through the income method. If you remember, by default, what was we calculating in income method by default? NDPFC, that is domestic income. By adding up three major elements, the three major elements were, yes, compensation of employees, operating surplus, mixed income. And once the domestic income is there, or we can say NDPFC is there, we were calculating anything which we wanted, right? By shifting up the three major things together. Secondly, if I talk about is the expenditure method, which I told you. And expenditure method is basically based on the five elements. Can anybody explain what we have to add in expenditure method? The proper explanation to expenditure method, just raise your hands. What we have to actually explain in the expenditure method. Toshit, I want you to explain the expenditure method. Over to you, Toshit. Toshit, we can't hear you. Start speaking. I think there is problem in your mic. There is some problem with your mic. Fine. Anyone else? Anushka Bansal. And Nishtha, be ready. Next turn is yours. Yes, sir. Start explaining the Hello. expenditure method that we did in the last class. In expenditure method, by default, GDP-MP is calculated. It is calculated by adding private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic fixed capital formation plus change in stock plus net exports. Private Okay. final consumption, I need to explain it too. Anushka, I'm not able to hear. Sir, explain भी करना है formula को. Anji, yes. How you will arrive, how you will reach to GDP MP. Okay. Private final consumption expenditure is the expenses incurred by the household, and it is also known as household final consumption expenditure, personal final consumption expenditure, and individual final consumption expenditure. Government final consumption expenditure is the expenditure which is incurred by the government. Then gross domestic fixed capital formation. It is the expenditure of the firm on the fixed assets. Okay. And change in stock is expenditure on the current assets. It can be calculated by closing stock minus opening stock, and it is also known as inventory investment. Net exports Okay. is expenditure incurred for exporting, and it is calculated by exports minus imports. Okay, so whenever we add up all these elements together, we simply get the GDP MP, and then any of the aggregate which is being required in the question, we can simply calculate, right? So, is there any difference? Is it, does it make any difference if we add up the third and fourth element together? Sir, if we add third and fourth element together, we can get gross domestic capital formation. All right.
So my question to you all is basically whenever I'm going to add the gross domestic fixed capital formation, suppose in the question gross domestic fixed capital formation is given, then do we need to take the change in stock in this situation? If gross domestic fixed capital formation is given, do we need to take the gross domestic change in stock in that situation? Okay, fine. I'm getting the answers. Yes. Gurnur, you have given the wrong answer. Of course, we need to add it. And this kind of explanation, this total explanation I want from Nishtha. She is going to explain this with regard to the expenditure method, that what all we need to do in this. Nishtha, over to you. So if gross domestic fixed capital formation is given, then we need to add change in stock in it. But if gross domestic capital formation is given, which means fixed word is not given in the question, then there is no need to add change in stock in it. Because that represents the total investment, right? Yes, sir. And what about if the information is given in net form? Suppose net domestic fixed capital formation is given. So then we need to add change in stock into it. Then after that we can get net domestic capital formation. And then we can deduct net domestic capital formation from gross domestic capital formation. No, if net is given, I'm saying that if net domestic fixed capital formation is given, then it said that Yes, we sir. have to add the change in stock into that and we'll simply get the net domestic capital formation. That would be the Yes. total net domestic capital formation. But in the expenditure formula, we need to get the gross domestic capital formation. That means for converting into gross, then definitely I need to add the depreciation into that. Yes. Because once I'll add the depreciation, that will become the gross domestic capital formation, right? Yes. Fine. So one last revision of expenditure method by Harshita, then I'll move for the next method, which is the today's method, that is the value added method, right? So I'm going to unmute Harshita. Harshita, please raise your hand as there are many students and I can't see your name on the screen. Okay, Harshita, over to you. So as in the case of income method, we used to get NDPFC by default. Similarly, in expenditure method, we get by default GDPMP. Yes. GDPMP is calculated by adding 5 components. First is private final consumption expenditure, which is also known as household or personal or individual final consumption expenditure. It is the expenditure incurred by households on purchasing final commodities. Second is government final consumption expenditure, which is also known as government demand for goods and services. It is the expenditure incurred by government. Third is gross domestic fixed capital formation, which is the expenditure of firms on the purchase of fixed assets. Fourth is change in stock or inventory investment, which is expenditure of firms on current assets, and it is calculated by deducting opening stock from closing stock. And fifth is net exports, that is expenditure incurred on exporting to other countries, that is calculated by deducting imports from exports. Fine. Okay, you just mute yourself, Harshita. So now I'm just moving for the next topic of today's class, that is the production method or value added method of calculating national income. First of all, let me tell you that whenever we are being asked to calculate the national income or any of the aggregate, I'm not just talking about the NNPFC, but I'm talking about whether a question is asking to calculate the GDPMP, GDPFC, NNPMP, NNPFC, NDPMP, NDPFC, we need to first look at the matter which is given to us in the question. Whether the items or the matter given to us in the question relate to the income method, it relates to the expenditure method, or it doesn't relate to any of these two methods. That means my first portion would be, my first step to be to look out the matter that is given in the question, whether it is for the income method or expenditure method. If I see that the question is asking to calculate it through the income method and also the data of income method is given in the question, then definitely I need to compute that aggregate through the income method only. And we have already learned that how to calculate any of the aggregate through income method, where we just have to find out the domestic income first, and once the domestic income is calculated, we can just move on to the any of the aggregate by using these 3 golden rules like net, gross, MPFC or national domestic, right?
So if the data is given to us in the form of the second expenditure method, yeah, that means the data is belongs to the expenditure method. Any of the expenditures are given to us. In the income method, of course, the incomes are given to us, so we have taken the income method data. If the data is related to the expenditures, whether the personal final is given, government final is given, gross domestic given hai, change in stock is there, net export is there. So ultimately what we need to do, we need to calculate the income method, we need to calculate the national income or any of the aggregate which is being asked by using the expenditure method only. And through the expenditure method, we have already learned that first of all, by default, GDP MP will be calculated. And once GDP MP is calculated, we can just move on to any of the aggregate by using the three golden rules, by shifting or changing it with the three golden rules, right? But sometimes in the question, you may see that the data is not related to the income method or expenditure method. The production method or the value added method data is given in the question, which means the third method to calculate the national income is ultimately the production method or product method, which is also known as the value added method. So this is the third and last method of calculating the national income. The numerical portion, this is the last in the numerical portion of calculating the national income. The third method is simple, value added method. Now question arises, what is value added method? See, value added method is basically the production method, the total output method. It is also known as the total output method, where we are taking out all the production that we people are doing. हम सारी production को continue कर रहे हैं, total कर रहे हैं, and we are calculating the national income estimate through the product method. Now let me share the whiteboard and will explain you that how we need to go for the production method. So I'm starting with the production method. Production method, yeah, product method. This product method is actually also known as the output method, total output method, right? And even its main name is value added method. Okay, so we are calculating this. In this, you have to just follow the two steps only. I'm just giving you the very easy, explanation of how to solve any numerical for any aggregate through the production method. Just follow only two steps. Simple. You have to follow only two steps for this product method or value added method. Now, what are these two steps that you need to follow for the product method? Where we have the first step, calculate value of output. The first is calculate value of output. Now, what is value of output and how it is calculated? वैल्यू ऑफ आउटपुट अब कैसे निकलने वाला है, यहां ध्यान दीजिए प्लीज. वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल्स टू सेल्स प्लस change in stock. This is the very much first formula. This is the only first formula that you need to calculate in the value added method. That whenever the question is asking to find out the national income from the value added method, you just have to go for the first step in the question, where you need to calculate the value of output. And how value of output is calculated. Value of output is actually calculated by adding up these two elements, sales plus change in stock. Sales plus change in stock. Where what is sales? Sales we already know. Sales का मतलब होता है the thing which we are selling to another, the commodities which we are selling to another. So the value of sales you need to take here. आपको यहाँ पर लेनी है वो वाला value of sales, ठीक? Once you take the value of sales, then you need to add the change in stock into that. What is change in stock? हम already कर चुके हैं change in stock. Change in stock is हाँ जी, closing stock minus opening stock. So very first formula was just
टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट लेना है सबसे पहले। तो सबसे पहला काम हमने करना ही है कि यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। The second step is value added. Calculate value added, or even we call it gross value added, GVAMP. GVAMP, gross value added at market price. अब ये क्या है GVAMP? बेटे GDP-MP सुना था ना, gross domestic product at market price। तो ये GVAMP है। अभी बताऊंगा इसको डिटेल में क्या है GVAMP। सो सेकेंड स्टेप के अंदर हम निकालते हैं वैल्यू एडेड और GVAMP। नाउ हाउ दिस इज कैलकुलेटेड, कैसे निकलता है वैल्यू एडेड और GVAMP? इट इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आपने ऊपर निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर बेटे निकाला, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, value of output minus intermediate consumption. This is our second step. Value of output हम ऊपर निकालना देख चुके हैं। Now what is intermediate consumption? Intermediate consumption का मतलब होता है, suppose firm B has purchased some raw material from firm A. Then the raw material which is purchased by firm B from firm A is ultimately the intermediate consumption. वो intermediate consumption ही होती है। यानी कि intermediate consumption is simply the amount which one firm is purchasing as a raw material from another firm. तो firm B अगर firm A से कुछ raw material खरीद रही है as a raw material, कुछ पैसा देकर भी कुछ सामान खरीद रही है, then that would be known as intermediate consumption. Now अब जरा पढ़ते हैं इस मेथड की डिटेल। We have always three sectors in our economy: primary sector, secondary sector, and third service sector. हमारे इकोनॉमी में हमेशा तीन सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, राइट? सो ये इनका काम क्या होता है अब देखो जरा। The primary sector, tertiary sector, and secondary sector, all three sectors are basically, related, or we can say all three sectors are somewhere working for one another only. The primary sector is making the primary goods, raw material, and providing it to secondary sector. Secondary sector is converting that raw material into finished products, right? It is converting that raw material into finished products and ultimately providing that product to service sector. Service sector is ultimately purchasing those values of commodities from secondary sector and ultimately selling the goods and services to the households or to the consumers. So अगर तीनों सेक्टर में से एक भी सेक्टर एब्सेंट होगा तो डेफिनेटली तीनों ही सेक्टर का काम रुक जाएगा, है ना? तीनों ही सेक्टर का काम रुक जाएगा 100%। अभी आप देख लो, इतना जरा जो ये पैंडेमिक चल रहा है, अगर इस दौरान, अगर ड्यूरिंग दिस की बात करें तो फार्मर्स के वेजिटेबल्स इतने वेस्ट हो रहे हैं। अभी आज ही मैंने सुबह रिपोर्ट देखी थी, एक आ रही थी उसमें दैट उसमें फार्मर्स ने कितना ज्यादा फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का जो नुकसान उनको हो रहा है, दैट पीपल ड्यू टू लॉकडाउन आर नॉट परचेजिंग एंड इवन पीपल आर नॉट एबल टू रेडी टू बाय इट। इवन अगर अनियन की बात करें तो फार्मर्स के थ्रू, फार्मर्स से 5 रुपीज पर केजी पे भी नोबडी इज बाइंग, 5 रुपीज पर केजी से भी नोबडी इज बाइंग द अनियंस। एज अ रिजल्ट फार्मर्स ने क्या किया, उन्होंने सड़क पे अनियंस वगैरह सब डाल के सब बिल्कुल खराब, नष्ट कर दिया, बिल्कुल उसको बिल्कुल ही खराब कर दिया। सो इफ एनी ऑफ वन सेक्टर इज इन हार्म देन डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑल द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एज वेल। सबको इकोनॉमी को असर पड़ेगा उसका। नाउ व्हाट इज इन द वैल्यू एडेड मेथड? सी सपोज wheat grown by farmer, फार्मर है, फार्मर को हम मान लेते हैं फर्म ए की बात कर रहे हैं, ठीक? फर्म ए ने वीट ग्रो किया और उसकी कॉस्ट फिक्स कर दी 100 रुपीज उसकी कॉस्ट फिक्स कर दी, ठीक? अब ए ने क्या किया, ए ने वो वीट किसको सेल किया? सेकेंडरी इंडस्ट्री बी को सेल किया। प्लीज ध्यान से सुनना, इसी में समझ में आएगा वाला मेथड। A sold the wheat produced by him for ₹100 to B, यानी कि A sold for 100 rupees to B। A ने तो
100 रुपीज से बी को सामान बेच दिया. नाउ बी कन्वर्टेड दैट रॉ मटेरियल, व्हीट को बी ने फ्लावर में कन्वर्ट करा, आटे में कन्वर्ट किया, ठीक. और बी ने अल्टीमेटली उसको आटे में कन्वर्ट करके, फ्लावर में कन्वर्ट करके बेकरी को सेल किया, विच इज सी. बेकरी को सेल किया. अब देखो बी के पास तो वो सामान आया था 100 में, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने उस 100 के बाद 300 रुपीज में सी को सेल किया. बी सोल्ड इट फॉर 300 रुपीज टू सी, यानी कि अल्टीमेटली बी ने उसके अंदर 200 रुपीज का वैल्यू ऐड कर दिया. बी एडेड 200 रुपीज वैल्यू एडेड and ultimately sold that thing to C for rupees 300. Now the bakery used that flour in making some biscuits, and after making the biscuits the bakery owner basically sold all these things to households. bakery owner ने household को सारा का सारा sell कर दिया for rupees suppose 500, for rupees 500, which means 500 rupees is ultimately the final good amount which has been reached to the household. But how much amount have been added by C? Bakery owner ने कितना पैसा उसके अंदर खर्च किया, ऐड किया? It added 200 rupees. उसने 200 rupees इसके अंदर ऐड किया था, ठीक. अब देखो यहाँ पे प्लीज, यही पॉइंट समझने वाला, प्लीज लुक एट दिस. The value added by A to B is 100, which means A was the primary person. He produced the wheat and sold it to B. तो ultimately 100 rupees तो सबसे पहले A ने contribute किया प्रोडक्शन के लिए, ठीक. B जो कि बेसिकली कन्वर्टर था, उसने कन्वर्ट किया wheat को फ्लावर के अंदर और C को सेल कर दिया, बेकरी ओनर को सेल कर दिया for rupees 300, which means the value added by the B was 200. बी ने वैल्यू ऐड कितना किया कमोडिटी के अंदर, 200 रुपीज का बी ने वैल्यू ऐड कर दिया. नाउ एज सी वाज द बेकरी ओनर, ही बेसिकली सोल्ड, ही बेसिकली व्हाट ही डिड, ही कन्वर्टेड दैट फ्लावर इनटू बिस्किट्स. उसने प्रोड्यूस किया फ्लावर को बिस्किट्स के अंदर कन्वर्ट किया एंड सोल्ड द बिस्किट्स टू हाउसहोल्ड्स फॉर रुपीज 500, व्हिच मींस द वैल्यू एडेड बाय द बी, बी ने जो वैल्यू ऐड किया, सी ने जो वैल्यू ऐड किया, सी added the value of again rupees 200. Now tell me what is the final product cost, what is the amount of the final product that reached to household, what is the final products amount that reached to household? That is simply 500, that is simply 500 rupees, which means the product cost is now rupees 500 which has reached to the household for a final or a finished product. But if I see, अगर मैं सबका अलग अलग इंडिविजुअली अमाउंट ले लूं, मैं कहूं ए ने 100 रुपीज में सामान दिया तो एज कंट्रीब्यूशन इज 100, बी ने 300 में बेचा सी को तो बी का कंट्रीब्यूशन 300 ले लूं, सी ने हाउस होल्ड को 500 में बेचा तो सी का कंट्रीब्यूशन 500 ले लूं, तो दैट विल कॉस्ट मी 900 रुपीज विच इज नॉट एट ऑल एनीवेयर. तो यानी कि टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हेन आई टोल्ड यू द फिनिश्ड गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स that we take only the value of finished goods. We take in the national income only the value of finished goods, because if we are not only taking the value of finished goods and we are taking the value of intermediate also, मैं कहूँ 100 A को पड़ा 100 A से ले लिया, B ने 300 में बेचा B से 300 ले लिया, C ने 500 में बेचा C से 500 में ले लिया. लेकिन हम ये क्यों बोल रहे हैं कि अगर C ने 500 में हाउस होल्ड को बेचा है तो C के 500 के अंदर ऑलरेडी A का 100 और B का 300 भी 200 भी इंक्लूडेड है. That is also included. So why we are taking the value individually? Instead of taking the value of individually, what we have to do is we have to take out the value of output, the finished value. हमें finished value लेनी है कि at last वो household के पास कितने में पहुंच रहा है. सीधा ठीक है. यहाँ तो आप क्या करो, आप value added लो कि A ने 100 रुपीज contribute किया, B ने extra 200 contribute किया उसके अंदर, C ने extra उसके अंदर 200 contribute किया. Take that and ultimately take the value 500. तब भी देखो 500 आ रही है. या just reach to the see to it that what is the final value of that particular amount for the household. 500. Take that value only. All right. So ultimately, when we are talking about that, what
how we have to compute the value added method, then we simply say that value added method is calculated by taking up only and only the two formulas. Only and only the two formulas. The very first formula where it is clear that we have to just calculate value of output, and value of output will be calculated as sales, कितना total आपने बेच दिया, plus change in stock, कितना अभी तक नहीं बिका, यानी कि change in stock is the additional stock ना, जो बच गया, जो इस साल नहीं बिका, जो next year बचेगा, which is calculated by closing minus opening stock. तो ये total value of output आ जाएगा, ये आ जाएगा in total आपने कितना अभी तक बनाया हुआ है, that will be ultimately calculated as a value of output. And when we say value added means कितना value added किया हमने, या हर सेक्टर ने कितना GVA MP निकाला, gross value added at market price means every sector ने, हर सेक्टर ने, whether वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उन्होंने कितना उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, जिसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि टोटल आउटपुट कितना निकला हमारा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब माइनस उस सेक्टर ने पिछले से कितना लिया था. अब अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेक्टर की, जो मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिया था, अब आप लोग मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताओ उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली जो मेरा प्राइमरी सेक्टर था, जो मेरा वीट ग्रोइंग सेक्टर था, फार्मर की अगर मैं बात करूं, तो फार्मर ने वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाया था 100 रुपीज का. मुझे बताओ क्या कुछ उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी फॉर द फार्मर? क्या फार्मर ने कहीं से कोई रॉ मटेरियल खरीदा था? उसने तो कोई कुछ भी कहीं से नहीं खरीदा था, उसने तो सारा का सारा खुद ही बनाया था. तो अल्टीमेटली देयर वाज नो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, द इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाज जीरो in case of primary sector, and as a result for the primary sector value of output will be value added will be value of output जो उसका 100 आया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0, यानी कि वैल्यू एडेड विल आल्सो बी 100. तभी मैंने देखो 100 लिखा था. फिर सेकेंडली अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, तो उस सेकंड थिंग के अंदर आपको पता है, अगर तो मैंने बोला कि सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, जब वो वीट जो था वो पहुंच गया था फ्लावर मिल वाले के पास. अब वो जब फ्लावर मिल वाले के पास पहुंचा था, तब मुझे बताओ वैल्यू एडिड कितना हुआ था. उसने टोटल बनाया था कितने का, 300 का, उसने टोटल 300 का बनाया था, माइनस उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी क्या कुछ? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स whether there was any intermediate consumption for the that flour mill. Yes, Thira, Kashish, दिव्या, प्रियांशी, यस, एवरीबॉडी हैज रिटन राइट, यस. उसका टोटल आउटपुट 300 का आया था, लेकिन हमें ये क्या ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाज 100, जो उसने वीट ग्रोइंग ओनर से खरीदी थी, जो उसने फार्मर से खरीदा था, 100 वाज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन. देन दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू एडेड? द वैल्यू एडेड इज सिंपल 200. ठीक है, बताया था उसने 200 का वैल्यू एडिशन किया. अब मुझे थर्ड सेक्टर बताओ. व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द सर्विस सेक्टर, बेकरी वाले की बात की मैंने, जब बेकरी के पास पहुंचा तो बेकरी ने फाइनल हाउसहोल्ड्स को बेचा 500 में. वेदर देयर was there any of the intermediate consumption for that bakery owner? Yes, there was intermediate consumption. कितना था? 300, जो उसने पीछे से लिया था, और 200 उसका वैल्यू एडेड निकल कर आया था. I think now this concept is clear to all, that how we need to compute the question, how we need to do the answer. Simple. What you have to do is, you have to just, with the value added method, you have to just follow the two and only two steps. The first step, calculate value of output first. Value of output निकलेगा sales plus change in stock. Why we are adding the change in stock? But because we are calculating total value of output, and total value of output means total कितना प्रोडक्शन हुआ. सेल्स का तो मतलब हो गया जो प्रोडक्शन हुआ और मैंने बेच दिया, ये तो वो हो गया अमाउंट, है ना. सेल्स भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में अलग अलग दी हो, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म सी, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए. यानी कि अगर तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर फर्म्स वाइज अलग अलग सेपरेट डाटा दिया हुआ है, तो हर सेक्टर का अलग अलग डाटा निकाल लो. जैसे ही हर सेक्टर का डाटा अलग अलग निकलेगा, लास्ट में क्लब कर दो. अगर एक ही का डाटा दिया हुआ है, तो सिंपल उसी का डाटा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा. चेंज इन स्टॉक ऐड क्यों किया? क्योंकि ये वो स्टॉक है जो इस साल नहीं सेल आउट हुआ, मींस नेक्स्ट ईयर इट विल बी यूज्ड, सो दैट विल कंसिडर्ड मी द टोटल आउटपुट. इसलिए मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट इससे निकाला. फिर सेकेंडली वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू ऐड हुआ वो निकालेंगे, जिसको हम जीवीए एमपी भी बोलते हैं. सो विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. बढ़ू आगे. इज इट क्लियर टिल नाउ? शैल आई मूव ऑन? Should I continue? Tell me.
So it's clear to all. You have written all these two formulas. I am now continuing to a very important topic. इसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ. सक्षम, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है व्हाट यू हैव परचेज्ड फ्रॉम द अदर सेक्टर एज अ रॉ मटेरियल व्हिच यू आर यूजिंग इन योर सेक्टर. आपने पीछे से क्या परचेज किया एज अ रॉ मटेरियल जो आप आगे यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट. So now I'm continuing with the topic. यहाँ ध्यान दो please. Suppose in a question you have been given the data of various sectors, like the primary sector is given to us, secondary data sector is given to us, service sector data is given to us. और अगर secondary sectors wise data नहीं दिया तो maybe the data is given as firm A, firm B and firm C. Maybe this way that data is given ABC, firm ABC. ऐसे क्वेश्चन में जहां पे डिफरेंट सेक्टर्स में डाटा दिया होगा या डिफरेंट फर्म्स में डाटा दिया होगा, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको क्या करना होगा उसके लिए, यू नीड टू एक्चुअली कंपाइल द डाटा. बट हाउ? आपको भी फर्म वाइज ही दोनों स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, विच मीन्स फर्स्ट you will do or you will solve the question for firm A. Once it is solved for firm A, then you will solve the question for firm B. And once it is solved for B also, then you will be going for C. Then ही उसी के बाद आप जाएंगे C की तरफ. ये ध्यान रखना आपने प्लीज. A, B, C के लिए आपको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा. यानी फॉर A I will go for the value of output and then value added. दोनों स्टेप मुझे A के लिए करने पड़ेंगे. जब हम A के लिए करेंगे, मान लो ये प्राइमरी सेक्टर है, तो पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट which will be like again sale plus change in stock. तो हम उसमें A का सारा सेल लेंगे, ध्यान रखना. Sale of A to B if it is given, sale of A to C if it is given, exports by sale A if it is firm A if it is given, which means we have to add the compile. We have to compile the total sale of A. That will be coming under the sales plus change in stock. A का जो change in stock होगा बताएगा वो closing stock of A, opening stock of A. इससे हमारे पास value added, इससे हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट A का निकल आएगा. ठीक, यानी कि विल बी सिंपली गेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर A फर्स्ट. द फर्स्ट स्टेप विल बी क्लियर. देन वी विल गो फॉर द सेकंड स्टेप इन A. वैल्यू एडेड निकालो उसका, या GVAMP निकालो, जो अल्टीमेटली ऊपर की तरह होगा. वैल्यू ऑफ आउटपुट जो ऊपर वाले स्टेप में निकाला होगा हमने, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब A की इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी हुई होगी, लेकिन इफ A इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या लिखा होगा, यहाँ तो लिखा होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय A, इंटरमीडिएट कॉस्ट बाय A. कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा परचेज ऑफ A बाय फर्म दिस. तो अगर A ने परचेज किया है किसी भी और फर्म से, तो डेफिनेटली वो तो A की इंटरमीडिएट कॉस्ट ही है ना, तो हम लोग वो भी इसके अंदर एज एन इंटरमीडिएट कॉस्ट कवर कर लेंगे. दिया हुआ ठीक, नहीं दिया तो जीरो, एंड यू विल बी सिंपली गेट GVAMP. क्लियर है? यहाँ तक आपके पास A का GVAMP आ जाएगा. सेम प्रोसीजर फॉर बोथ द स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर B. सेम प्रोसीजर फॉर बोथ द स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर C. ध्यान देना, यहाँ पे तीनों का अलग अलग GVAMP मैंने निकाल लिया, A का भी, B का भी, C का भी. अब मैंने क्या किया नेक्स्ट, तीनों के GVAMP को ऐड करा मैंने. व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली ऐड GVAMP ऑफ A प्लस GVAMP ऑफ B प्लस GVAMP ऑफ C. तीनों के GVAMP को जब मैं ऐड कर दूंगा, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट GDPMP. हाँ जी, GDPMP आ गया हमारे पास. वी विल सिंपली गेट GDPMP because the sum total of GVAMP of all these three sector is GDPMP. और जैसे ही GDPMP आपके पास आ गया, वैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म. जो भी फिर गोल्डन रूल्स के जरिए क्वेश्चन निकालने को बोला है, you can calculate. But very most important point to be noted here, if three sectors information is not given, if the question is reflecting only the information of one sector only, in that case there is no need to take all GVAMP. वहां तो एक ही GVAMP निकल आएगा ना, ये दो स्टेप्स करके. जैसे ही वो GVAMP आएगा, वही एक GVAMP आपका क्या हो जाएगा, GDPMP. I hope this method is clear to all now. सबको क्लियर है ये वाला मेथड? I hope it is clear to all. Please write in the chat box if it is clear to all, or if any doubt is there, tell me. अगर कोई डाउट भी है तो
clear. Okay. बाकी भी बोल दिया करो, जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी जरा कुछ बोला करो. Fine. So please do practice of this. मैं कल फिर से एक बार इसकी रिवीजन के साथ इसके न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ. Tomorrow I will go for its revision once again and the numerical of this question, because exam में 3 to 4 marks का numerical आता है इसमें से. So we have to do that, and this week till Friday, of course, we have to complete this national income, because still some theory is left. We have to complete this national income chapter, and then we will go for the revision work, recapitulation work of all the chapters, and then your UT will be there. All right. So I think this is clear to all. कल मैं एक बार दोबारा से explain कर दूंगा ये वाला. Rajan, I'll explain tomorrow once again, and एक बार explain करने के बाद I will take the numericals also by tomorrow. Till then, kindly revise the topic once again, please.